ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಎಂಎಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಪೌಷ್ ಪರ್ವಣ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಪೌಷ್ ಪರ್ವಾಣ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುಕೃತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಪೌಷ್ ಪರ್ವಾಣ್ ಹಬ್ಬವು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. For the special event over here related to a sweet. Sir was telling me about a sweet. So I was hearing about that, and I said even those kind of things we do in South India and in Karnataka. So as you say, we are divided, that's all. States are divided, but our culture is same. We all have the same kind of food habits. We do like all kind of the same sweets. It might be a little bit different, but in our religion, in Hindutva, everything is the same. So favorite is dal chawal everywhere, anna sambar. So like that. So this is a special event. We celebrate. The sweet he was mentioning that we do in Yugadi. The Poli which we do in Yugadi. So it's a new year for us. So Sankranti is also new year for few of the states. So it's like that. So everything is same. And I am here to announce one small thing. We have Hindu Samajotsav. Hindu Samajotsav is taking place across India. So RSS has completed 100 years now. So 100 साल की शताब्दी कंप्लीट किया है आरएसएस. तो इसलिए हिंदू समाजोत्सव मना रहे हैं हम. हिंदू समाजोत्सव क्या है? ये कुछ कम्युनल नहीं है. ये सभी हिंदुओं को एक जगह जोड़ना है. उन लोगों को सभी जो हमारा हिंदू बटे हुए हैं, कैस्ट अदर कैटेगरीज में बटे हुए, सबको एक जगह लाना है और उन लोगों को बताना है कि हम सभी एक ही है. तो इस चीज़ के लिए फॉर द what do you say, to unite all the Hindus at a place, we are doing this Hindu Samajotsav. So in Sarjapura we are doing Hindu Samajotsav on 31st of January. We have another 2 weeks. Coming 31st we are doing. So we are expected some thousands of people, like might be some 5 to 10,000 people or more. It might be more also. So we are planning for a massive program, and the special part is Annamalai is the chief guest. So he'll be coming and he'll be addressing all our Hindu friends. And we have this Deshi Mela, we have this Gomata Pradarshini, and we have Swadeshi Mela, and we are going around in Sajapura in Shobha Yatra. So lot of other programs are there, and we have a Hindu band, especially a special program. We are doing a Hindu band on that day. It's next to the D-Mart, Sarjapura. We have a huge space over there. We have a lot of parking facility, and even all the seating facility will be there. You all are I stay near Sarjapur Road, and I'm so happy that we are able to provide medical expertise now to this community. We have our newest state-of-art center at Sarjapur Road,
And more than that, what I'm happy and excited about is we are launching the Sparsh Kutumba card. We will be displaying the QR code here, which you can use to download a digital card. And you will be empowered with multiple benefits to enable prevention and diseases for your entire family. So as an oncologist with special interest in women cancers, I urge the men here to protect the Durgas, the Lakshmis and the Saraswatis of your family and encourage cancer screening programs for your family, protect your family, and a very, very happy and healthy festive. মানে হেব্বাল থেকে আমাদের স্টুডিও থেকে আসতে প্রায় 2 ঘন্টা লেগেছে, কিন্তু বিউটিফুল। এই যে এত এখান থেকে আমি ফিশ ফ্রাইয়ের গন্ধ পাচ্ছি, অনেক আমার পিঠে পুলি আছে, তো আমার ফেলিসিটেশনটা বড় কথা না, এখানে এই যে পৌষ মেলাটা হচ্ছে, দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ভেরি ভেরি বিউটিফুল। খুব ফিলিংসটা, এই যে ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যেন কোথাও হলদিয়ায় বা মানে কোথাও একটা বারাসাত বা এরকম একটা কিছু ফিলিংস, এই ফিলিংসটার জন্য স্বীকৃতির জন্য একটা বড় হাততালি। ইন ইন্ডিয়া অলরেডি ভেরি গুড। Thank you so much, everyone. We are so grateful you guys have called us, and I am not Bengali, but I can speak in Bengali. So, खूब भालो लगता है एखाने एसे, and thank you so much. और जैसे हम लोग इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं दुर्गा पूजा में, और उस समय का भी एम्बियंस बहुत अच्छा था, वाइब बहुत अच्छा था यहाँ पे, और अभी भी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए म्यूज़िक को, और म्यूज़िक के लिए ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। এইগুলো পাওয়ার জন্যই আমাদের শিল্পীরা বেঁচে থাকি আমরা। আমি জানি না কতটুকু আমি করতে পেরেছি 25 বছরে, কিন্তু যেখানে যার কোনো অসুবিধা হবে অন মিউজিক অর এনিথিং টু ডু উইথ মিউজিক, ইনফ্যাক্ট আপনাকে বলে দিই এখানে আমাদের অনেক ইন্টার্নশিপের জন্য মানুষরা সারা ভারতবর্ষ থেকে লাইভ ইন্ডিয়াতে আসছে। অনেক ভালোবাসতে পারবো, আর আপনারাও ভালোবাসা দেবেন আমাদের ব্যান্ডকে, আমাদের ইনিশিয়েটিভকে, এটাই চাইবো। থ্যাংক ইউ স্যার। felicitation event, and I thank every one of you, and especially Supratik sir and the Orco band and the Alive India community. Thank you so much. খেতে ভালোবাসি আমরা, হরিদ্বারে গিয়ে চানও করতে ভালোবাসি, এটাই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। এবং আমার মনে হয় সেখানে আজ পর্যন্ত আমরা বলে দিই যে মোহাম্মদ রফি মুসলিম কেন, কিশোর কুমার হিন্দু কেন, আজ পর্যন্ত এটা কেউ বলেনি এবং সেটা বলবেও না। অ্যাজ আ মিউজিশিয়ান আই লাভ পিপল, আর আমি যেটা বলেছি আমার গানে, যদি পারেন শুনে নেবেন, ডিয়ার বাংলাদেশ আমার গানটার নাম। প্রোটেস্ট সং বাট ইন আ ভেরি বিউটিফুল ওয়ে। শুনুন, ভালো লাগবে হয়তো। রমজানের নাম আছে, দিওয়ালিতে হালি বাজে, রমজানের নাম আছে, দিওয়ালিতে হালি বাজে, শব্দতে মিলে মিশে বিভাজন দেখো মানুষে, বিশ্বাস নিজের নিজের থাকুক অন্তরে, মসজিদে হোক আজান, শঙ্খ বাজুক মন্দিরে, মসজিদে হোক আজান, শঙ্খ বাজুক মন্দিরে। পৃথিবীটা মানুষের থাক, পৃথিবীটা মানুষের থাক, মানুষের মতন হয়ে মসজিদে থাক, হোক আজান, শঙ্খ বাজুক মন্দিরে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। A pleasure, and really I'm just enjoying it here, and I love the crowd that I can see here. So yeah, and then I have just started with the food blogging, like in month of December I just started, and it's just taking that level up. So yeah, that's it. Thank you everyone, and I hope you are enjoying this Posh Parvan Mela. And I just got to know this is the first year of Posh Parvan Mela, and really this is an incredible crowd that I can see. So give a clap for yourself and for the Sukriti Cultural Association members as well. Thank you. একটু বাংলা জানি, বাংলা বুঝতে পারি, ভালো থেকে চেষ্টা করি। ভেরি গুড, দ্যাটস ভেরি ইমপ্রেসিভ। বেঙ্গল কোথায় আসি? এখানে। The one who has love, he has Bengal here. What is the culture of this country? Actually, the gentleman, the singer from Orco,
I think what a beautiful message. Sir, if you're here, I would like you to come here on the stage. The Orco band. Tumar Dekho Nai. That is the song, right? Yeah? See, this is exactly the beauty of this country. Everybody likes Posh Mela, everybody likes Durga Puja, everybody likes Kannada Rajyotsava. Ade nam Samskruti, ade nam Preeti, ade nam Prema. And I want to tell this message, I'm sure this message has to go through the social media to people who are living in Bangladesh. India is a land where a Muslim comes to a program which has 100% Hindus. This is what India is all about. India is all about love, care, togetherness, spirituality, contribution. This is India. Ade nama Bharata Nadu. Ramzan theke Ram achi, Diwali re Ali. That's exactly what is the point. And I have always loved the beautiful Bengali culture, which is mishti like Roshagulla, and which is talk like Macher Jhol, Puchka. Yes. So everybody, please be happy. And next time when we come here, I want a Bengali band to come and perform in Kannada language here. Bengali band should. Anyway, Kannadiga tane pa. Are there any Kannadigas here? Kannadiga tane now. Nivellaru. People would like to see you being adopted to the state, contribute. Right now, आप लोग सब जो हैं यहाँ के कर्म योगी हैं. This is your karma bhumi. Janma bhumi is that. Karma bhumi is as important as Janma bhumi. I hope you all live happy. If there is anything what Kannada would like to give it to you back, if Kannada culture would like to give it back to you, that is prosperity, success, togetherness. Tamilarigu Hridayapurvaka Suswagata. Actually, the Deputy Chief Minister of Karnataka, Mr. D.K. Shivakumar, was supposed to come. He could not come. He has sent me one message to all of you that Karnataka loves you all. Karnataka would like to see your contribution so that this country grows economically. This country is far more superior than you and me. So let us contribute for the betterment of Karnataka state and the country. Sabaiki, Posh Miller, Preeti Sugar, Bhalavashi, and Ami Bangali Jani na, but next time Ami ekhane aschi Ami accepted that I still miss the food of Calcutta. Some mutton biryani and mutton stew. It used to be very delicious. Really. Okay. I will definitely enjoy it here. But it's really a good gathering, and I really enjoyed it. এখন 50 বছরে 75 years Bengali Association.